Hi everyone, this is Talvinder along with Amar and Sonupam, and we are here very excitement. Right from the beginning, right from the scratch, all the way to execution. We will just wait for a couple of minutes before we kick off. Hi Vaishnavi. It has been a wonderful, I think, about 15 years for me building products. For Sonupam, I think a decade, and Amar, I think a decade as well. And of course, we have seen a tremendous change in how product management has from a being a very niche कि ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, ये तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, ये तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी नहीं है, ये तो बस कोऑर्डिनेशन है, से today where product management is pretty much the backbone of every single product company that you have ever heard of. And पिछले एक दो साल में तो और ही आंधी तूफान हो गया, especially because thanks to the funding that came in, everybody wanted to build products as fast as possible. Plus I think एक और reason ये भी था कि Indian audience is way more dynamic, way more um, way more digital now as compared to 4-5 साल पहले. So which is why the need for having products which can be handled and used by the users directly became all the more important. We will start with a quick introduction round between the three of us, and then we can, continue from there. So I'm Talvinder. Like I said, 15 साल का experience है. Product management तब शुरू किया जब पता भी नहीं था कि product management होता है. I've built 3 companies. पहली company was in EdTech, K-12 education में कुछ कर रहे थे हम लोग. I sold it in 2010. उसके बाद launched another company called Tushki, which was into local activities and things to do, like Airbnb experiences. That product became part of ClearTrip in 2015 के आसपास. ClearTrip ने एक product launch किया था, ClearTrip Local. उसका एक part बन गया वो. उसके बाद I joined a company called Free Culture as a chief product officer, and I helped them build a marketplace. Three-sided marketplace थी. T-shirts की आप designs upload कर सकते हो, and then we will automatically print it and dispatch it. ऐसा कुछ बनाया था, and led to the company getting acquired by another company. That is 2015 end के आसपास, and then I joined Oyo when Oyo was not the Oyo of today. Oyo of पुराना जिसमें marketplace था, and you can book rooms in budget hotels. तो we were experimenting with the idea कि अपने खुद के होटल चलाने में क्या लगेगा, क्या एफर्ट लगेगा, एंड क्या चला सकते हैं, क्या प्रॉफिटेबल रहेगा कि नहीं, एक्सेट्रा स्केल अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा. So I was hired to actually figure out this very experimental idea, and I'm glad कि जो भी बनाया that worked out very well, and that helped Oyo in scaling up across India. I think 2-3 महीने 4 महीने के अंदर हम 200-300 होटल्स खड़े कर दिए थे. So I built out the software stack required for doing that, and then the same software stack was scaled in different countries. और उसके बाद I started a company called Pragmatic Leaders, which has been running for the last 5 years, जिसमें we introduced the whole idea of we felt ओयो के टाइम पे हमने फील किया कि प्रोडक्ट की बहुत ज़रूरत है इंडिया में, एंड इंडिया में वो सर्विसेज माइंडसेट से प्रोडक्ट माइंडसेट शिफ्ट होगा, एंड तब प्रोडक्ट मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगी. तो हमने वहाँ से शुरू किया, एंड वी स्टार्टेड विद केस बेस्ड कुछ कोर्सेज वगैरह. And in the last 5 years, we have done very well. We have been able to pioneer a certain kind of very long MBA का alternative kind of program, जिसके through we have been able to place people across all the top product companies that you can think of. सोनुपम से भी मुलाकात वैसे ही हुई, एंड अमर से मुलाकात वैसे ही उसी पीएल pragmatic leaders के चक्कर में ही हुई. And I'm glad that we have been able to form great associations and great careers. Um,
एंड वहीं से ये इंस्पिरेशन आया कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट को और लोगों के पास पहुंचाना चाहिए, एंड दैट इज हाउ अनअकैडमी हैपेंड, एंड आई एम सो ग्लैड टू बी हियर. Amar has come a long way. Amar, why don't you talk about yourself? Sure. Thanks, Salvinder. Hi, everybody. Hi, Anto. Thank you for messaging in. जो भी हैं, if you can just drop in a hello, it would be great to know who, where you're from, etc. Parallelly, we'll continue talking. Yeah. So, मेरा जर्नी प्रोडक्ट मैनेजमेंट में थोड़ा सा अलग रहा है from what you will usually hear. I don't come from a pure technical engineering background. I don't come from, say, a banking background, which I can get into finance technology. तो मेरा बैकग्राउंड है साइकोलॉजी, बैचलर्स, और मैंने फिर अपना मास्टर्स किया मार्केटिंग में. एंड मैंने शुरुआत की मार्केटिंग में, मार्केटिंग से ऑपरेशंस भी, और फिर उसमें मैं आई वेंट इनटू अ जर्नी ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस. And from customer experience, I learned more, trained myself more, learned more, and found my, you could say, fitment, bolo ya jo bhi bolo, into the product space from a user point of view, right? पहले भी जो भी मार्केटिंग किया या जो भी किया, इट हैज़ ऑलवेज बिन कि यूज़र को क्या पेन हो रहा है और क्या प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके मैं उसको थोड़ा हेल्प कर सकूँ, राइट? माइंडसेट हमारा हमेशा वैसा ही था. So I've been in startups almost my entire life, 15 years of working, of which about 10 years has been pure product play kind of thing. 5 years has been a little mixed. I think in the last few years, I've been lucky enough, I will say, डोमेन एग्नोस्टिक जो एक बोलते हैं ना, कि कोई एक डोमेन का मैं स्पेशलाइजेशन नहीं है मेरा. मेरा है कि यूजर का स्पेशलाइजेशन क्या है, उसको क्या चाहिए, वो मेरा फोकस रहा है हमेशा. सो आई हैव वर्कड with Grofers, which is now part of Zomato. I was heading their customer experience division. वहाँ पर apart from the operational side, the entire CRM जो बोलते हैं, जो एजेंट प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, उसको पूरा कैसे बनाना है, एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर्स क्या इंटीग्रेट करने हैं, एनालिटिक्स टीम एक पूरा बिल्ड किया. तो ये सब किया. एंड देन आई वाज विद डाइन आउट, सिमिलर space, customer experience. After that, I joined, this was pre-COVID, around 2017, 18, 2018. I joined a company called Friend, which was actually an NGO that Google and Tata Trust started, right? मैं जो 3 साल यहाँ पर था, then of course COVID hit, but जो 3 साल यहाँ पर रह के मैंने जो सीखा है, वो सबसे डीप अंडरस्टैंडिंग मेरी जो बिल्ड हो पाई है, वो है यूजर की. फॉर एग्जांपल, वी वर्कड विद एसेंशियली रूरल इंडिया. तो रूरल इंडियन वुमेन, इन महिलाओं के लिए हम टेक्नोलॉजी कैसे बिल्ड कर सकते हैं, प्रोडक्ट कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा मेरा एक फोकस रहा है वहाँ पर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी फॉर देम विद गूगल एंड टाटा, end-to-end platform building, from project management to content management to identity access. So that is something, as we बाकी जो classes हम करेंगे या sessions करेंगे, recordings करेंगे, I'll talk a little bit more about that, because there is a lot to learn. जो तलविंदर जैसे बोल रहे थे, बहुत सारा डिजिटल अडॉप्शन आज हो गया है. वो अब आपके टियर 1 सिटीज से अब टियर 2, टियर 3 और रूरल इंडिया की तरफ जा रहा है. तो ये यूजर्स कौन हैं, क्या चाहते हैं, उनकी क्या मुश्किलें हैं, उनके लिए कैसे बिल्ड करना है, ये सब is where my focus has been. After that, I was with Airtel after the NGO. I was with Airtel working again on Black program. आपका जो आज आप ब्रॉडबैंड, मोबाइल, डीटीएच सब कंबाइन करके एक डिस्काउंटेड आपको एक प्रोग्राम मिल जाता है एक बिल के अंदर, वो ब्लैक प्रोग्राम. I was one of the key people who launched it, working across teams. तो मैंने टीम लीडरशिप साइड भी देखा है, मैंने
इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर साइड भी देखा है, बीच में बैठ के सबका सुनो और सबका काम करो और उनके साथ काम करो, वो भी देखा है. एंड देन आई हैव बीन विद ओयो टिल रिसेंटली. I think my journey with Alvinder started as a student of pragmatic, and as soon as that was over, the one thing he said कि भाई अब तूने बहुत काम कर लिया, बहुत पढ़ लिया है, अब जाके अब थोड़ा जो सीखा है वो आगे बढ़ाओ. Help people understand. So that's what I have been in the journey for the last couple of years mostly, and great to be part of an Unacademy and all of us together who are really going to take this, to the next scale. So yeah, that's a little bit about me, and most of my time now I'm giving into speaking to young freshers, students who want to understand कि ये भाई ये product है क्या. So yeah, Sonupam, over to you. Yeah, thanks, Amar. So actually, मेरा journey Amar से थोड़ा सा different रहा है, right? And I think that is the beauty of bringing people from different backdrops together, right? I mean, just so interesting to hear other people's journeys, perspectives, and how they landed, right? तो मेरा थोड़ा सा standard था कि ठीक है 12th के बाद engineering कर लो and let's just become a software engineer, and especially 2005 2006 में थोड़ा सा B.Tech पे focus भी था. And it so happened that a lot of my cousins and brothers and sisters were doing that, so I started with like a B.Tech degree. Cut to when I graduated in 2009, तो थोड़ा सा recession का time था, right? 2008 2009 recession का time था. सारे job offers या तो deferred थे या cancelled थे. And even though I did very well academically, I was here sitting jobless. So then I thought, okay, what to do? So a lot of my friends then started doing that typical MBA prep. Okay, ठीक है, let's just get into getting another degree, and then more skill sets, and then different job. So I said, okay, ठीक है, let me also do that. So then I started with my MBA journey. In the meantime, a few of my job offers got revived like 2010 के around. So I also started, working as a software developer. But I realized कि थोड़ा सा जो management का जो काम है, right, जो थोड़ा मेरे managers करते थे as opposed to me as an individual contributor, that excited me more. So then I gung ho way में I did my MBA prep, got into MBA. So in 2011 is when I did my MBA from IT Delhi. And तब ना consultancy पे बहुत focus था, right? Like all your McKinseys of the world. तो my dream job was like कि ठीक है consultancy में हो जाए. But it so happened that my summer internship में I sort of entered into what was product management, in the 2011 2012 era, right? So it was still around, I would say, it was a mix of, I would say, user research, metrics. It wasn't as nuanced as it is today, but yeah, it was still product management. And I started doing that, and I realized that okay, ये तो काफी fun है ना, because you have like these different elements of really speaking to the users, understanding their viewpoint, also an angle of like entire metrics, etc., right? Because how will you then determine success of this feature or whether to do this or not. And obviously in terms of stakeholders and partners, आपका एक engineering team तो रहेगा, तो जो भी B.Tech में सीखा है वो आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो. एंड एट द सेम टाइम थोड़ा सा जैसे बोलने का शौक था, तो थोड़ा सा स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, पार्टनर्स, अंडरस्टैंडिंग पीपल, वो वाला एंगल भी इस रोल में आ गया. तो थ्रू माई लाइफ प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप आई रियलाइज ओके, consultancy out, product management it is. So when I graduated, I started working with American Express. उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि नहीं फाइनेंस में ही करना है ये सब, बट हाँ मेरा बैकड्रॉप फाइनेंस का था एमबीए में, तो मुझे लगा ठीक है, विन विन सिचुएशन. When I got into Amex, that's when I realized that okay, US में, America में, Canada में, right, all these Western countries, the concept of credit is very nuanced, right? Like India में तो थोड़ा सा लोग ऐसे बुरा सोचते हैं if you have taken a loan like a home loan या education loan ना, it's not very positive, it's looked down upon. But ये system US का नहीं है, right? Like they run on credit, even for a vacation they are open to take credit. तो उस mindset को picture करते हुए credit card का product में different features लाना, for a very Western market, that was like a huge shift for me, right? So I think first 2 to 3 years I just spent understanding, the fintech industry, understanding credit card as a product, which is like the creep product for Amex, and also understanding the users, right, who are very different, in mindset and in spending patterns from the Asian markets, right? So I think 2 to 3 years I just understood, this product, this market, that okay, credit card पे पैसा बनता कैसे, right? How is money really flowing within the different entities, right? Whether it's businesses, merchants, people, all of that. फिर after 3 4 years मुझे लगा ठीक है, credit card तो समझ में आ गया, what's next, right? What are other flavors of lending, right? In which
हम लोग को पैसा दे के पैसा बना सकते हैं. And at that point, Amex was also, trying to do a shift in terms of other products. And that's when we decided कि ठीक है loans product करते हैं, है ना. और हमने वो typical ANSOF of metrics किया कि ठीक है existing consumers के लिए हम एक नया product ला के देखते हैं और फिर इस product को different users को लेके जाएंगे. So typical two-step strategy. तो ठीक है, जब वो लोन्स का डिसाइड हुआ, देन अगेन स्मॉल फाउंडिंग मेंबर टीम बनी. सो इवन दो इट्स फॉर अ बिग एंटरप्राइज लाइक एमेक्स, बट लोन्स इटसेल्फ वाज अ वेरी स्मॉल प्रोडक्ट, राइट. And we thought कि ठीक है, this is going to run as a startup within a big enterprise, right. So while the first 3-4 years were very structured like a typical MNC, the next 2-3 years were more unstructured but with a lot of flexibility like our typical startup or like a typical new product would run. तो वही लोन्स का पूरा आइडिएशन करना, राइट. उसका राइट फ्रॉम किसको लोन्स देंगे, कितना लोन देंगे, राइट. अगर कोई बंदा लोन पे डिफॉल्ट कर गया तो क्या एक्शंस मेजर्स लेंगे, राइट. तो द एंटायर लाइफ साइकिल is where I was involved in. Obviously we first launched in America market but then scaled it up a little bit more globally. So that part was really exciting क्योंकि obviously प्रोडक्ट का कॉन्स्ट्रक्ट सेम है, लेकिन एज योर मार्केट इज चेंजिंग, आपका यूजर बिहेवियर चेंज हो रहा है ना, यूजर स्पेंडिंग पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा चेंज हो रहा है, उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट भी चेंज करना पड़ेगा. एंड ऑब्वियसली ये जितना सिंपल सुनने में लगता है, एट द बैक एंड देयर इज अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व, देयर आर लॉट ऑफ पार्टनर्स इन्वॉल्व, एंड देयर आर लॉट ऑफ डेटा साइंस मॉडल्स इन्वॉल्व, राइट. लाइक हाउ विल यू डिटर्मिन कि मैं अमर को लोन दूं या ना दूं, राइट. एंड अगर दूं तो कितना दूं, इज इट 10,000 रुपीज और इज इट 10 lakh रुपीज, राइट. लाइक व्हाट इज द राइट अमाउंट for me to give. So at the back end, I'm leveraging a lot of data, a lot of technology, and a lot of power of data science, right? तो ये सब किया for another 4 years, right? So total 8 years with Amex. Then I thought कि ठीक है, now let me take a shift. I understand this industry well. Now let me take a shift. So then I shifted to Walmart. Again, great experience, right? Market pretty much was North America market, but I think the entire product changed, right? The people changed, the ways of working changed. So great learning there. And around यही 2020 2021 because COVID आ गया था, तो I felt like okay, I suddenly have more time on my hand because commute time बच गया है, Saturday Sunday का पूरा time बच गया. That's when I got associated with pragmatic leaders also, right. Met Talvinder, met his great team. So parallelly I started being interested in speaking about product management, right. Helping others build a career in product management, or at least take the correct decision, whether it's the right, decision for them, and if yes, and how to venture into it. So this is around 2020 21. Parallelly, I would say after a year, I was approached with PayPal for a similar role as Amex. So, because I'm so passionate about fintech in this industry, I actually decided to take up this role about a year and a half ago. So currently, I'm with PayPal. Again, predominantly in the fintech space, right? Building great products globally. And yeah, really enjoying the journey. So मेरा थोड़ा सा domain specific in terms of fintech, right? So out of 10 years, 9 years is into fintech. So I really hope that I can share my experience, that knowledge, with all of you guys who are interested in building a career, in this field, or at least getting to know about this field, right? And obviously predominant थोड़ा सा western experience है, but क्योंकि काफ़ी सारे products eventually Asian markets में भी launch किए, like India, China, Hong Kong, Singapore. So I think that contrast of how the same product needs to change basis the user behavior, basis the market, basis the regulation, right? The regulatory environment. I think all of that at least I found very interesting, and in the next few sessions, would be happy to share that. And yeah, really excited and looking forward to this journey with an academy and with Amar and Talvinder, as teammates. Awesome. Sir, Good. I know आपने अपना introduction तो दिया, but I think one thing that he totally missed out was that apart from this whole side of him, where he's launching companies and he's helping out young people, he actually has had like some kind of a stint with Bollywood, right? And I think he has also produced music, and his actual goal was to become a choreographer, right? But वहाँ से total shift लेके he didn't choreograph people or songs. He ended up choreographing, great products which are benefiting all of us. And this was So while yeah, he was studying aerospace engineering also. So yeah. it's just So this, rockets तो बने yeah, नहीं, companies बन yeah, गई, yeah. successful ones. ये तो आपने थोड़ा खुफिया जानकारी कहाँ से निकाली? ये Um, हमारा user research है on Dalvinder. हाँ, and by the way, सोनुपम
की भी एक चीज बता देता हूँ. सोनुपम इज एग्जैक्टली दैट पर्सन इन द क्लास जिसके लिए सब लोग क्रिब मारते थे कि यार टॉप करती है हमेशा. So she topped throughout all her school और her colleges, सब जगह टॉप मारा है. तो ये वही लड़की है, वो शर्मा जी की बेटी है. एंड आई थिंक जब जब ऑब्वियसली जो लोग टॉप मारते हैं लोगों को लगता है अच्छा इनका तो करियर प्लान फिगर्ड आउट होगा ही लाइफ का, लाइक दे हैव एवरीथिंग सॉर्टेड. ऐसा कुछ भी नहीं होता. आई थिंक आई वाज आल्सो एज लॉस्ट एंड एज कंफ्यूज्ड एज अ लॉट ऑफ अस टुडे, कि करियर में करना क्या है, कुछ ऐसा जो मीनिंगफुल भी हो, जो एक्साइटिंग भी लगे, राइट? एंड देन Correct, ऑब्वियसली correct, मनी फॉलोज, बट I mean, that well-roundedness. So even I was utna hi lost as some of you may be today. correct, But correct. I mean, it's good that platforms like these actually help us, right? It's a Absolutely. great networking platform. So yeah. So I think between the three of us, I think ये बहुत ही, I mean, two themes that I would like to highlight before we go ahead. कि एक तो है कि आप देख सकते हो प्रोडक्ट मैनेजमेंट में लोग कहीं से भी आ सकते हैं. कोई ऐसा सेट रूल, कोई सेट पैटर्न, कोई सेट पाथ नहीं है. जैसे अगर आपको कंसल्टिंग में घुसना तो क्लियर है कि आपको आईआईटी करना पड़ेगा, आपको आईआईएम करना पड़ेगा, उसके बाद आप कंसल्टिंग में घुस सकते हो, राइट? वो ही पाथ फॉलो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास, लोग कंसिडर ही नहीं करेंगे. लेकिन प्रोडक्ट मैनेजमेंट में इट्स अ वेरी लेवल प्लेइंग फील्ड, इट्स अ वेरी मेरिटोक्रेटिक फील्ड. इट डजंट मैटर कि आप किस बैकग्राउंड से आ सकते हो. बिटवीन द थ्री ऑफ अस यू कैन सी, मैं इंजीनियर हूँ, मैंने कोई एमबीए नहीं किया, मैं एंटरप्रेन्योर बन गया, वहां से मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट में घुसा एंड उसी में कंटिन्यू किया, राइट? एक चीज जरूर है कि एक बार एनीबडी हु फाइंड्स प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एक बार वो रोल बन जाता है तो आई हैव नॉट सीन समबडी शिफ्टिंग आउट ऑफ इट. दैट्स वन थिंग आई हैव सीन कंसिस्टेंटली. सो इट्स अ वेरी रिटेंशन बहुत अच्छा है प्रोडक्ट मैनेजमेंट एज अ रोल का. एंड सोनुपम कम्स फ्रॉम एन इंजीनियरिंग एमबीए डिग्री. एंड वहां से शी हैड अ वेरी स्पेसिफिक पाथवे कि मैं यही बहुत ही मेथोडिकली शी मैनेज्ड थ्रू आउट, है ना? मेरे केस में थोड़ा-सा रैंडम था कि मैंने आईआईटी जेईई कर लिया, उसके बाद मैंने एरोस्पेस कर लिया, एरोस्पेस करने के बाद मैंने सीटीओ से एंटरप्रेन्योरशिप में घुस गया, वहाँ से कुछ और कर लिया, कोरियोग्राफ करना चाहता था मैं, वहाँ से यहाँ पहुँच गए. तो थोड़ा-सा let the universe decide for me kind of मेरा जर्नी रहा. एंड अमर कम्स फ्रॉम नन ऑफ these बैकग्राउंड्स. वो ही कम्स फ्रॉम a यूजर साइकोलॉजी बैकग्राउंड, जो से लोग आते ही नहीं है टिपिकली, लेकिन आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए. So that's like the key crux of what product managers do. So I think that's one key takeaway that I think all of you should take away कि आप doesn't matter आप कहाँ से आ रहे हो, आपका क्या बैकग्राउंड है, क्या नहीं है, doesn't matter as long as you have some empathy, थोड़ा दिमाग समझ समझ में आता है कि यूजर्स को क्या चाहिए, या फिर आप समझा सकते हो अपने आप को कि यूजर्स को क्या चाहिए, एंड थोड़ा आपको लॉजिक समझ में आता है, यू कैन बी अ गुड पीएम. फॉर पोटेंशियल हर किसी का है मार्केट में, एंड प्लस अभी तो इतनी डिमांड है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ जॉब्स एंड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल. That's one takeaway. The second takeaway is कि between the three of us, um, we will be able to cover a lot of ground. So Amar, for example, has done a lot of consumer product. Like Airtel Black is being used by पता नहीं कितने मिलियन users. मैं खुद यूज करता था, मुझे पता नहीं था कि अमर ने बदल किया. Right? Sonupam has been helping Amex, and then from a fintech enterprise side, Amex, Walmart, and then PayPal. Right? तो बहुत ही enterprise fintech वाला वो depth, वो maturity का experience, जहाँ पे एक छोटी mistake भी मतलब millions and billions of dollars की mistake हो सकती है. Right? She comes from that background, and I come from an entrepreneurship background जहाँ 0 to 1 की journey बहुत जरूरी होती है कि कुछ भी नहीं है वहां से खड़ा करना है. सुनुपम ने भी किया है for a large company. मैंने किया है for very very small company to medium size company to a very large company like Oyo. उस टाइम पे बड़ी नहीं थी, उतनी बड़ी नहीं थी, बट ठीक है. तो दैट इज between the three of us we cover a very large ground and we'll try to cover as much as possible with these three very distinct perspectives. इसमें हमारे थोड़े झगड़े भी होंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, but I hope everything is going to be productive. So Anything that you would like to add, Amar, Sonupam, to this? that pretty much sums up the thing. तो मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ जो तविंदर फर्स्ट पॉइंट बोल रहे थे, फर्स्ट टेक अवे. Back in 2011 is where I first stepped into product management, right? And it was basically as a founding member of a startup. There is in India today, and Sonupam can probably add here with her experience.
प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो है एज अ कॉन्सेप्ट, एज ए यू नो एज ए फील्ड, अभी भी इंडिया में इवॉल्व हो रहा है, राइट? इट इज स्टिल वेरी मच अभी, लेट्स से, आई वुडंट से बेबी स्टेज, बट नेसेंट स्टेज। अभी वो पहले कदम ले चुका है, अब आगे ये अभी समझ वो के। हाँ प्री प्यूबर्टी वाला स्टेज है। हाँ हाँ, वो वही है। वेर एज कम्पेयर टू आपके यूरोपियन या यूएस मार्केट्स, जहाँ पर ये थोड़े और आगे बढ़ चुका है, वेर द थोड़ा इवॉल्व हो चुका है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम अभी फॉर different people to come into this field, right? And give their different views. Like, I very straightforward, शुरुआत में, hi POV9, I hope that it was a good point I made. I hope it was helpful. Hi Santosh, welcome. And जो मैं बोल रहा था basically, आप जैसे आओगे अपने बैकग्राउंड्स के साथ, अपने एक्सपीरियंसेस के साथ, अपने डोमेन्स के साथ, अपने लर्निंग्स के साथ, आपको थोड़ा अपना एक प्लेस ढूंढना पड़ेगा, यस, राइट? मगर वो प्लेस ढूंढने में एक मजा है, और एक बार वो प्लेस आप वो ढूंढ लोगे और अपना जगह थोड़ा बना लोगे, विच इज वेयर ओवर द नेक्स्ट मल्टीपल सेशंस between three of us, we are going to try to cover that breadth, not just depth of certain things, कि कहाँ कहाँ से हम सोच के आ सकते हैं, right? To the second takeaway, I just want to top up कि problem solving, which I myself आज भी 15 साल काम करके भी स्टार्टअप्स में 0 to 1, 1 to 10, 10 above भी बिल्ड करके अभी भी मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि there is so much to learn. वो लॉजिकल रीजनिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, AI जो अब आ गया है, that has just taken things to the next stage, right? And वन ऑन वन काफ़ी फ्रेशर्स ने भी मेरे को मैसेज जैसे करते हैं, बीच बीच में बात हो जाती है। जैसे मैंने कोई कोहॉर्ट्स किए हैं, वन ऑफ देम इज हियर, क्वेश्चन केम दैट with AI what do I do now, right? So we're going to cover that also. It is about ये जो आपके सामने आ रहा है, आप उसको कैसे इस्तेमाल करो, right? Very 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 good question. POV9, I hope I don't know your full name. I'm going to use the tag. Vivek. His name is Vivek. Hey, He just Vivek. Okay. So I'll just read it out if that's okay. Yeah. yeah. How do I find that I'm the right fit to pursue product management? If I risk my career and take that shift, that's a little scary. So, Vivek, this question, trust me, even after doing multiple years of product management, I came across this question about 2-3 years ago, because that was again a time where product management as a concept in India was shifting again. Yeah. Right. And people were looking at, again, the engineers mainly versus people who are non-engineers, right? That's one problem statement a lot of freshers come to us with. Trust me, it is scary, but trust me, if you speak to students who've taken that jump, myself, I'll say, and Talvinder will attest to it, it is worth it, right? It is a really, really amazing space if you enjoy learning, if you enjoy growing, if you enjoy contributing, right? Which I think wherever we work, हमारा एक तो रहता है यार भाई पैसे आ रहे हैं, मगर हम कुछ कर पा रहे हैं या नहीं ऑफिस में, है ना, जो हम बिल्ड कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं. This is like the ultimate space for that kind of thing. Yeah. So I'll just pick up from where Amar has left, and I think I'll invite Sonupam to talk about this. But I think दो तीन agenda points हैं यहाँ पे जो we would love to cover in detail about के right fit क्या होता है product management में, and I think I'll be covering a good amount of, so between the three of us हम लोग ने ऐसा कुछ divide किया है. Of course it's not like clear cut division, but I'll be covering a lot about careers, how do you find your calling, how do you keep yourself motivated till you get that calling, and then finally, and in a very methodical way जो हमने follow किया है in my last 5-6 years of work at Pragmatic. So we'll talk about a lot of that careers. Secondly, ये अभी AI नाम की एक चिड़िया आई है, which is okay, बहुत पुरानी है, 60-70 साल पुरानी है, लेकिन now it has threatening finally कि भाई मैं आ गई हूँ, अब देख लो अपना.
So how do you tackle such threats? Honestly, such threats will always come. कभी वो macro economic threat हो सकता है, COVID types, या रिसेशन टाइप्स, कभी इस तरह के टेक्नोलॉजी लेवल शिफ्ट्स आ सकते हैं, राइट? Which can threaten, of course AI threat is a little larger, little more nuanced, a little more larger than those micro threats, but still इस तरह के आते रहेंगे। और आपका करियर कम से कम 30 साल का है, तो 30 साल में कम से कम एट द बेयर मिनिमम, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर 7-8 साल में शिफ्ट मारती है, सो बेयर मिनिमम 4 से 5 इस तरह के एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स आएंगे, कम से कम, जहाँ आपको लगेगा कि यार क्या ही कर रहा हूँ मैं लाइफ में, राइट? या फिर कुछ फ़ायदा नहीं है ये सब कुछ करने का, पहाड़ों में चलते हैं, खेती-बाड़ी करते हैं। ट्रस्ट मी, अ लॉट ऑफ पीपल हैव टोल्ड मी दैट कि पहाड़ों में चलते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, खेती-बाड़ी करते हैं। सो एनीवे उसके लिए भी टैलेंट चाहिए होता है भाई। सो खैर, आंसरिंग योर क्वेश्चन इन अ वेरी आई थिंक सिंगल वर्ड जो मैं प्रोडक्ट मैनेजर्स के लिए बोलता हूँ, वो चाहे किसी भी तरह के लोग हों, जैसे हम तीनों के बीच में अब यू कैन सी हमारी पर्सनैलिटीज़ बहुत अलग-अलग तरह की है, राइट? लेकिन हम तीनों एक लेवल, एक वर्ड में हम तीनों एक जैसे हैं, वो है खुराफाती। We have always been khurafati, which means we have always liked trying new things. We have always liked trying doing new things, learning about them. नहीं भी आता है तो भी घुस के सीखना हमें मजा आता है, राइट? और चार लोगों को कन्विंस करके उसको सही तरीके से लॉन्च करना या करवाना, वो उसमें मजा आता है, राइट? अदरवाइज प्रोडक्ट मैनेजमेंट थोड़ी थैंकलेस जॉब है। सारी गालियां आपको पड़ेंगी, तारीफ सबको मिलेगी, ठीक है? थोड़ी थैंकलेस जॉब। लेकिन उसके बावजूद हमें बहुत मज़ा आता है। क्यों? बिकॉज़ दैट इज़ व्हाट द डीएनए इज़। तो ये खुराफाती हो कि नहीं हो, इस तरीके से हो कि नहीं हो, आई थिंक वी विल कवर दैट इन द अपकमिंग सेशंस। अम, मैंने तो बता दिया, मैं अब करियर्स पे बात करूँगा, थोड़ा एआई के थ्रेट्स के बारे में बात करूँगा, थोड़ा प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में ऑफ कोर्स इसी कॉन्टेक्स्ट में बात होगी। आई विल टॉक अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। ये जो कोर एसेट्स हैं, जो आप कैसे बिल्ड करो, कोर स्किल्स कैसे बिल्ड करो। Sonupam, what do you think? What you will be covering in the next many sessions? Yeah, I think first, everything to do with fintech space, hai na? So how does money really revolve, right? How does it really exchange hands? And every time that exchange of hands is happening, right? It doesn't matter कि few rupees है या lakhs है, crores है. Hmm. क्या क्या entities involved हैं जो इस चीज़ को empower करती हैं, right? I mean, I'm sure, at least for me, it's true. I think it's true for a lot of us. I am no longer carrying my wallet. My wallet does not have cash, right? I'm only carrying my phone, which needs to be charged, and it needs to have few basic apps, right? Like your wallets as well as all my banking apps. And with that I know कि अगर मेरे को कुछ भी पसंद आएगा, कुछ भी करना है, I can manage my day, my month, my year, right? But you have to understand कि जब भी वो money जा रहा है, right? If I'm going to a shop to get tea, या if a merchant is planning to launch another shop in another area, तो उसके लिए जो funding है, right? Anytime there's exchanging hands, चाहे मेरे तलविंदर का हो या मेरा किसी और शॉप के साथ हो या दो शॉप्स का आपस में हो, राइट? सो टू मर्चेंट्स exchanging hands, right? All of that is going to get empowered because there is a lending entity, right? Typically a bank, but there could be other variations of it as well, right? So we'll cover all of that in detail, right? How is money revolving? How are some of the new products, right? Whether it's credit cards, whether it's loans, whether it's wallets, how are they functioning, right? How are transactions functioning? एंड एट द बैक एंड क्या क्या कोर कॉन्सेप्ट्स या प्रिंसिपल्स हैं जो कि इसको एम्पावर करते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल यू वुड हैव हर्ड अबाउट योर सिबिल स्कोर, राइट? तो सिबिल स्कोर क्या है, एकदम से कैसे आ गया, ये कैसे कैलकुलेट होता है, इसका ऊपर नीचे होने से मेरा लेंडिंग पावर कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, राइट? Other things like how is GPay working, how is Paytm working, all of that, right? Even things like how is cred, which was earlier only used to make payments, आज के डेट में you can get a loan on that app, right? तो वो लोन कैसे फंक्शन कर रहा है, डिफरेंट एंटिटीज का लोन आपस में कैसे डिफरेंट है, एंड कि लोग डिसाइड कैसे कर रहे हैं कि अच्छा मैं सोनूपम को कितना अमाउंट का लोन दे सकता हूँ और कितने टाइम के लिए. तो ये पूरा कोर कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट अदर थिंग्स दैट आई हैव प्लान इन माइंड इज एक फोकस रहता है कि इंटरव्यूज में क्या पूछेंगे, राइट? इंटरव्यूज में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को एक प्रोडक्ट माइंडसेट से मैं कैसे आंसर कर सकता हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन सुनने में तो बड़ा इजी लगेगा, है ना? टिपिकल वंस बीइंग डिजाइन एन अलार्म क्लॉक फॉर द ब्लाइंड, तो लोग को लगता है अच्छा तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, तो 5 मिनट में मैं आंसर कर दूंगा. लेकिन वो एक्चुअली उसमें प्रोडक्ट थिंकिंग कैसे लानी है, उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में यूजर बिहेवियर कैसे लाना है, राइट? डिफरेंट ऑप्शंस कैसे लाने हैं, उन ऑप्शंस के बीच में
ट्रेड ऑफ एनालिसिस करके प्रायोरिटाइज कैसे करना, राइट. सो थोड़े बहुत टिपिकल इंटरव्यू क्वेश्चंस, उनका बैकग्राउंड पे क्या फ्रेमवर्क रहना चाहिए, all of that is what we can do, through mock series, right. So that would be my second core area, right. So talking about finance and everything that empowers it, for example data science, technology, all of that we will cover. And we can do this more globally, right. India में कैसे चल रहा है, बाहर के देशों में कैसे चल रहा है, right. तो एक पूरा full rounded perspective. And second, obviously interview preparation, right. And people who are already going through interviews, maybe I'll try to bring them on board to see latest, because the entire way of interviewing has also changed after COVID, right. Yeah. तो उसको कैसे समझ सकते हैं बेटर, और परफॉर्मेंस बेटर थ्रू वीडियो कॉल्स कैसे दे सकते हैं rather than face to face. Some of those nuances and aspects also I will be covering in the sessions. Awesome. So Anupam, I have two questions to this. One, ये पैसे जो इतने घूमते हैं, ये मेरे पास क्यों नहीं आते हैं? आपके पास आ रहे हैं, आप कंपनी बेच रहे हो, लेकिन आप उस पैसे से नई कंपनी खड़ी कर रहे हो, तो आपको और बढ़ा रहे हो कहीं ना कहीं. पेपर पे सब कुछ. पेपर पे सब that I have to agree. और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आई थिंक पीपल विल आल्सो बी क्यूरियस अबाउट दैट अपार्ट फ्रॉम दिस एंटायर साइंस ऑफ मूवमेंट ऑफ मनी, if I have to build a new credit card, जैसे आजकल बहुत क्रेडिट कार्ड कंपनीज आ गई, राइट, वन कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, तो if I have to do that, if I have to develop it, मुझे क्या चाहिए? What do I need to have to be able to build, let's say, the next fintech company? That's one. And secondly, from your background, which like I'm personally very curious कि इस पूरे fintech landscape में लगता है सब कुछ हो चुका है, कोई opportunity बची नहीं है. But from your perspective, अगर कोई यहाँ पे जो सुन रहा है, अगर कोई खुराफाती है and wants to launch his own product or her own product in the fintech space, कहाँ पे opportunity बची है, कहाँ पे कुछ कर सकते हैं, right? आई थिंक बोथ आर फैंटास्टिक क्वेश्चंस, है ना. जो फर्स्ट वाला है, मुझे लगता है वो मैं उसको डिटेल में अपने किसी सेशन में इंक्लूड कर सकती हूँ, राइट, बिकॉज काफी सारे पिलर्स चाहिए होंगे और उन पिलर्स पे अच्छे से बात करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा. बट आई फील दैट्स अ ग्रेट आइडिया फॉर वन ऑफ द सेशंस. एंड क्योंकि मैंने वैसा लोन्स के लिए किया हुआ है, तो वैसा एक काउंटर पार्ट हम किसी भी लैंडिंग प्रोडक्ट के लिए बिल्ड कर सकते हैं, राइट. जो सेकेंड वाला है उसके लिए मैं एक आइडिया देती हूँ. तो जब आप क्रेडिट लेने जाते हो तो कुछ कुछ बेसिक चीज़ें आपसे बैंक या लेंडर पूछता है. फॉर एग्जांपल, क्या आप एम्प्लॉयड हो, आपकी सैलरी स्लिप क्या है, ऑल ऑफ दैट, राइट. तो एक चंक ऑफ सेगमेंट के लिए तो लोन्स लेना या किसी भी टाइप का क्रेडिट कार्ड लेना और उस पर अच्छी लिमिट लेना बहुत ईजी है, लेकिन ये चीज़ यूनिवर्सली ट्रू नहीं है. तो कुछ कुछ सेगमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग या तो अंडर बैंक्ड सेगमेंट्स बोलेंगे, जैसे रूरल इंडिया, राइट, बिकॉज इट्स नॉट वेरी, दे डोंट a lot of times have bank accounts also. उनको टेक्नोलॉजी का इतना आइडिया नहीं है, वहाँ पे इतना इंटरनेट नहीं है, राइट. ये सब इश्यूज की वजह से दोज आर अंडर बैंक्ड सेगमेंट्स. दैट इज वन की अपॉर्चुनिटी एरिया, राइट. The other one I would say new to credit, जिनको हम NTC बोलते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल फ्रेशर्स, फ्रेश ग्रेजुएट्स, तो हमें पता है कि बहुतों में बहुत पोटेंशियल है, बिकॉज खुराफाती माइंडसेट है और थोड़ा बहुत एजुकेशन बैकिंग भी है, लेकिन अभी तक अच्छे से पैसे कमाना स्टार्ट नहीं किया, राइट. या ट्रू इनकमिंग आउटगोइंग ऑफ कैश फ्लोज इतना क्लियर नहीं है बाय वर्च्यू ऑफ अ बैंक अकाउंट, राइट, जो आप सैलरी स्लिप्स या स्टेटमेंट्स में आप दिखा पाए. लेकिन वी नो के पोटेंशियल है, आज नहीं तो कल दे आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, दे विल बिल्ड थिंग्स एंड दे विल बी एबल टू मैनेज कैश फ्लोज. तो जिनको भी हम न्यू टू क्रेडिट सेगमेंट्स बोलते हैं, जिनका इतना हिस्ट्री ऑफ क्रेडिट नहीं है या हिस्ट्री ऑफ इनकमिंग आउटगोइंग कैश फ्लोज नहीं है, वो एक और बहुत अच्छा मार्केट है जिनको टैप इन किया जा सकता है. और बस वही समझना है कि ऑल्टरनेट सोर्सेस ऑफ डेटा क्या है टू अंडरस्टैंड कि इसको देना भी चाहिए या ये तो डिफॉल्ट, ये इतना खुराफाती है कि डिफॉल्ट ही कर जाएगा. तो राइट लेवल ऑफ खुराफाती कैंडिडेट ढूंढना could be like a very good potential area, especially for markets like India, जहाँ पे young youth बहुत I population. think I think we will do in one of the sessions a few session series कर सकते हैं जहाँ पे we can actually do a walk through of coming up with ideas, brainstorming over multiple ideas, and then starting to kill some of the ideas, and then figuring out how do we create some sense of it, right? We can do a session around that. I think people will like it and Yeah. will learn from it. Sounds Amar, what do you think you will be covering? Yeah, so I'm going to take slightly the different view from fintech and enterprise onto the consumer side. So I'm splitting what I'm probably going to try and cover over 4-5 pieces, right? One is mainly sort of understanding the world of consumer product management, right? जो विवेक आपका सवाल था कि right fit क्या है, right?
in the consumer product world, maybe basis your experiences where you'll fit. So I'll get into that, right? Mostly I'll try and keep it as engaging and conversational as possible, because one of the questions that also comes up is uh, मेरी जो strength है वो कितना salary मेरे को मिलेगा, right? So these are questions. I think Talvinder, you and me somewhere we'll discuss these, right? This is Yes. one piece. Uh, A question, sorry, before you progress. What is consumer product management? Look, so let's keep it very simple for now, because the answer to that, like the first question to Sonam, it's a much more vast answer. But at a very basic level, you're trying to build something for your real users who are using it. I'll give you an example, right? अब Zomato build करेगा कोई चीज से for their internal teams, से CRM है या अपनी operations team जो city launch कर रही है उनके लिए वगैरह. And then there is the app जो आज आप सब हम सब इस्तेमाल करते हैं, right? In when you get into the organization और आप product team में काम करोगे, आपको बोला जाएगा आप consumer app team में काम कर रहे हो. जैसे अभी ओयो में the app where आप booking करते हो, that is the consumer app. So that is the world of, in a very, very basic way, consumer product management, working on an app or an interface, right, where a user is interacting with what you're offering them, right, digitally, right? And I'm using the word digitally here. वेरी ऑफन, जैसे अगर आप देखोगे पेटीएम ने जो उनका कंज्यूमर साइड है, उन्होंने अपना डिजिटल ऐप तो खोला कि आप यहाँ पर भी केवाईसी कर सकते हो ऑन द ऐप, बट आप एक स्टोर में भी जाके कर सकते हो. So then that becomes sort of a phygital kind of concept. So I'll elaborate more into this world, right? But consumer product is basically how we as product managers help the user. For me, a user is, say, in rural India, if I take Sonupam's example, a woman who wants to apply for a loan, right? Well, how is she going to do it sitting at home on her mobile phone, right? So how do I build for that person? How do I design for that person, right? What are the problems that I need to solve for that user? So these are a few things which come into this world. Yeah. Yeah. Okay. Okay. So basically, the glamorous world of Zomato, Swiggy, Oyo, Ola, all of that. Okay. Yeah. Hanji. So you'll be covering what exactly? So I'll cover a little bit about the idea of B2C versus others, right? I'll try and keep, bring in my experience of what I've worked in a lot of hyper growth startups. So, when you join maybe as a new PM, you would probably end up joining a startup rather than maybe a larger corporation, right? So what are the expectations that come in? What are the kind of salaries that may happen? Things like that, right? I will do a Q&A and AMA kind of session also around all of this, where just keep it open floor for anybody who has questions like the one Vivek had, right? So that's one section. The second section that I'm going to cover is going much deeper into understanding users, right? One is जो एक Sonupam was mentioning about NTC. Sorry if I got that terminology right? So we call it on the consumer side. There is this whole talk about NBU, right? The next billion users, right? This is your new internet users who are coming, who are getting access to more smartphones and they're using smartphones, etc., etc. So how do we understand them? How do we design for them? How do we build for them, right? And there is a lot of pieces around this. I'm also going to touch very briefly upon ये एक शब्द बहुत चलता है स्पेशली कंज्यूमर दुनिया में, गेमिफिकेशन करके, जो एक साइड है जो सोचता है ठीक है गेम्स लगा दिया है तो एंगेजमेंट इंक्रीज हो रही है, वो नहीं है. It is a much deeper science. So I will briefly touch upon that, but depending on how the conversations go, we can probably elaborate more on that. I will spend some time also on customer experience as a product, right? It's just a word कि हमको कॉल सेंटर फोन करना है, मगर उसके पीछे क्या क्या जाता है, which is a fascinating world, because this is truly for me where एक होता है people, process और product कैसे उनका
मिलाप होता है वो ये वर्ल्ड में बहुत दिखता है. So I'll cover that. I will touch upon also AI side, but I think Talvinder will take on the more technical, the latest trends, etc. side. I'm going to get a little bit more into AI and humans, right? How we interact. What are the biases that these models have? I've been lucky enough, even before 2021, 22, where AI started to again, bloom out. 2018-19 में I was able to start accessing and learning about AI, right? Image recognition technology, login agnostic, personalization for homepage, things like this, right? And there were a lot of learnings. So I'm going to talk a little bit about things around that side, right? Uh, यहाँ पर डेटा प्रिवेसी, एथिक्स, ऐसी चीजें जो यूजर्स को इफेक्ट करती. I'm going to bring in that viewpoint on the AI talk out there. Awesome. The last piece I will do is again focusing on how to build careers or get into product management. I'm going to just use Chat GPT as a baseline, right? As to how you can use that and leverage that to get into the product space as well as to use it as a product manager, right? And how you can expand on that. I think apart from this, one of the things that we will all be doing is sort of fireside chats with guests, right? So, I mean, everybody here from the platform is looking to maybe, who shift into product management and find a job. एक job ढूंढना है. So speak to recruiters. A couple of people I know from the B2C space on the Google side and the design space on, these organizations such as IDEO and, who are the biggest design agencies in the world, to get them to talk to us, right? To help us understand कि ये वाली दुनिया user वाली उनकी कैसे करें? angle से क्या है. So yeah, that's how I'm going to break it up. Awesome. So, to summarize, the three of us will be talking about careers, interview preparations, etc., and from our own lenses. That's one. Amar is going to focus much more on the consumer side of things, what it takes to be a consumer PM. Sonupam will bring her enterprise and fintech experience and how do you become a PM in scenarios and worlds where fail fast का concept है ही नहीं. And ब्रेक रूल्स एंड फेल फास्ट वो सब फंडा नहीं है यहाँ पे नहीं कर सकते हो फेल बिकॉज पैसे की बात है राइट and I will be talking about careers again, but I'll talk more from the fitment perspective because career build करने दो तीन चीजें होती हैं. एक होता है कि आपने फिगर आउट कर लिया कि मुझे यही करना है. दूसरा है कि once you have figured it out, then अब करना कैसे है? What all do I need to learn and what all assets I need to prepare so that I can crack? Then learning how the game is played, the interview game is played, and so on. And then finally, what are the threats to your career? Right? And how do you maximize your earning potential? ये चीज़ थोड़ी अच्छे से समझ में आती है मुझे. विदाउट रिवीलिंग नंबर्स बहुत अच्छे से समझ में आती है. सो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू मेक द मोस्ट ऑफ योर पोटेंशियल. आप कहीं से भी आए हो, ठीक है. वी हैव अबाउट 10 minutes लेफ्ट जिसमें आई थिंक क्विकली अ राउंड ऑन टू थिंग्स. वन इज ब्रीफली व्हाट इज प्रोडक्ट मैनेजमेंट. ये हमारी थोड़ी-थोड़ी बातें हुई हैं, लेकिन इट विल बी ग्रेट. हमने हमने अज़्यूम कर लिया सबको प्रोडक्ट मैनेजमेंट पता है. इट विल बी ग्रेट अगर ब्रीफली इन 1 minute, Sonupam, what is product management to you? Yeah, I would say meaningful activities which actually help solve कुछ ना कुछ customer का problem. तो कुछ pain point है, कुछ issue आ रहा है, कुछ solve करना है. तो उसको बहुत अच्छे से एकदम यूजर इंट्यूटिव बनाते हो कि बहुत कोई ट्रेनिंग या समझने की जरूरत ना हो, खुद से इंसान समझ जाए. अगर कोई ऐसा फीचर ऐड हो जाए या प्रोडक्ट ऐड हो जाए, सो दैट इज प्रोडक्ट मैनेजमेंट फॉर मी, राइट. लाइक कोई एक ऐसा एक्टिविटी, इनिशिएटिव, फीचर या प्रोडक्ट, राइट. सो फ्यूचर विद जो कि कोई ना कोई पेन पॉइंट कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करता है या कस्टमर डिलाइट बढ़ाता है. दैट फॉर मी इज प्रोडक्ट मैनेजमेंट, राइट. तो आई थिंक यूजर द किस डेट टू विच वुड मेक मी रियली हैप्पी इज अगर मैं उस डिलाइट को क्वांटिफाई कर पाऊँ, राइट. कहीं ना कहीं उसमें मेट्रिक्स में सक्सेस मेट्रिक डाल पाऊँ, राइट, जस्ट सो दैट आई नो कि वो इम्पैक्ट, वो डेल्टा कितना है, राइट, एंड वो एफर्ट कितना गया, थोड़ा सा
prioritization perspective से, but basically customer delight, which is quantifiable. That is product management for me in today's world. So basically यूजर्स की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा, हाँ तुम एक फीचर दोगे, वो तुम्हें 10 लाख देगा। ठीक है, correct. गॉट इट। अमर? यार सिमिलर लाइन हो तो मेरा ही यूजर ले लिया। So yeah, so for me, it is very fundamentally कि मैं क्या बना सकता हूँ, या फिर अगर कोई प्रोडक्ट बना हुआ है जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ और उसको थोड़ा मॉर्फ करके, अडेप्ट करके, कोई यूजर का जो पेन हो रहा है उसको कैसे सॉल्व करूँ। फंडामेंटली ये है, राइट। बट मैं एक चीज इस पर डेफिनेटली आई टॉप अप इज द मेट्रिक पॉइंट। बट आजकल एवरीबडी यूजेस दिस टर्म कॉल्ड डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, राइट। मगर ये डेटा ड्रिवन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बन जाता है सिर्फ एक क्वांटिटेटिव डेटा, राइट। क्वालिटेटिव डेटा कहीं गुम हो जाता है या सेकंड हो जाता है। मगर हाउ दीज टू टॉक टू ईच अदर फॉर मी इज a big piece of product management and how you build something for users, right? Because that is where then you are truly listening and empathizing, which is what some key skill sets of PMs as we go ahead we Correct. learn, right? To की हो क्या रहा है। तो ये 0 to 1 हो या 1 to 10 हो या कोई चीज को स्केल अप करना हो वगैरह, आई थिंक दिस अप्लाइज फॉर मी एट लीस्ट एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, अप्लाइज राइट थ्रू। सो या Awesome. दैट्स फॉर मी। Awesome. I think मेरा तो थोड़ी खिचड़ी है आप दोनों के आंसर की, कि फंडामेंटली प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ, आर्ट भी है, साइंस भी है, बिकॉज आपको इंट्यूशन लगाना पड़ता है। यू कैन नॉट सिंपली रिलाई ऑन डेटा, जस्ट लाइक अमर इज सेइंग, एंड यू कैन नॉट सिंपली रिलाई ऑन योर इंट्यूशन कि मेरे को लगता है कि ये होना चाहिए, बिकॉज देन यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ बायसेस, क्योंकि आपने जिस तरह से जिंदगी जी है, जरूरी नहीं कि योर कस्टमर्स आर आल्सो गोइंग टू live the same life or want to live the same life. So it's an art and science of putting certain features, putting certain technical software features that makes life easier for your users. इतना easy कि वो कुछ ना कुछ तरीके से आपको compensate करने को ready हो जाए, कि भई या तो मेरा time ले लो, या पैसे ले लो, या दोनों ले लो, right? So that's product management for me to a good extent. Ultimately, it comes down to getting compensated for what you do. एंड अगर आपने फीचर ऐसा बनाया है, जो कि फीचर या प्रोडक्ट ऐसा बनाया है जिसके लिए यूजर्स फाइंड इट वर्दी ऑफ देयर टाइम और मनी, दे विल इन्वेस्ट, एंड दैट्स द एंटायर आर्ट, एंड यू कीप रिपीटिंग दिस सो दैट यू कैन गेट मोर मनी, मोर टाइम फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और in the last 6 minutes of our time, it will be great to very quickly cover what career in product management looks like. मैं थोड़ा सा टच कर लेता हूँ इसको। See, career in product management has typically 7 levels. Starts from the lowest level is APM, Associate Product Manager, which is, I think, a title. राजमा बन गए। So, एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर, एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर होता है कि इट्स अ टर्म डिराइव्ड फ्रॉम, बोरोड फ्रॉम द कंसल्टिंग वर्ल्ड। एंड एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट लाइक द स्टेपिंग स्टोन, जिससे पहले या तो आप बीए होते हो, बिजनेस एनालिस्ट होते हो, या फिर प्रोडक्ट एनालिस्ट होते हो। प्रोडक्ट एनालिस्ट थोड़ा सा फैंसी टाइटल है, टू बी ऑनेस्ट, बहुत कम कंपनीज में, मोस्ट कंपनीज में बीए होते हैं, ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट होते हैं। वो एक ये कन्वेंशनल रूट हो गया, बाय द वे, दिस इज कन्वेंशनल रूट, कि आप फ्रेशर हो, फ्रेशर से बीए बने, बीए से एपीएम बने, या डायरेक्टली एपीएम बन गए। एपीएम से फिर आप पीएम बनते हो, पीएम से फिर एसपीएम बनते हो, सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर, सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर से आप ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर बनते हो, ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर से डायरेक्टर, फिर वीपी, सीपीओ। अब इसके बीच में वीपी के ऊपर और नीचे, डिपेंडिंग ऑन कि अब किसी को थोड़ा अपीज करना है, प्रमोशन नहीं दे सकते हैं लेकिन फिर भी देना है, सैलरी थोड़ी बढ़ानी है, तो आप वीपी के ऊपर नीचे एसवीपी और एवीपी बन जाते हैं। सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर के आसपास में भी कुछ बन जाता है, टाइटल बन जाते हैं, तो ये थोड़े से म्यूटेशंस बन जाते हैं, लेकिन लेवल्स यही है। अब ये सब रोल्स अलग अलग काम करते हैं। एपीएम ऑफ कोर्स घोड़ागिरी करता है, मैक्सिमम घोड़ागिरी वही करता है, सारे काम मोहब्बत,
लाइक डेटा लिखना, डेटा जुगाड़ना, पीआरडी लिखना, वो सारा काम वो करता है। और सीपीओ जो थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक काम करता है, और इसके इन दोनों के बीच में जितने भी रोल्स हैं, ये इन दोनों के बीच के काम करते हैं। सो टैक्टिकल एंड फंक्शनल, टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक, तो ये 7 लेवल्स हैं। लाइक वी सेड राइट इन द बिगिनिंग कि कोई ऐसा स्पेसिफिक पाथ नहीं है। ऑफ कोर्स द probability ratio of you becoming an APM, PM, SPM is higher if you have done IIT and NIT or ISB or IIM, etc. If you have done from those colleges, probability high है. But to be honest, and पिछले 5-6 साल में ये बहुत clearly established हो चुका है in terms of numbers कि वो जो जनता है बहुत कम है, वो जनता ही बहुत कम है। वो सेलेक्ट कितने करते हैं? 1% ऑफ द एंटायर स्टूडेंट पॉपुलेशन, राइट? एक्चुअली लेस देन 1%। तो वो जनता ही बहुत कम है जो कि मार्केट में जाती है, और उस तरह की कंपनीज ही बहुत ही कम है जो कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कॉलेजेस से लेती है। मोस्ट कंपनीज आर ओपन फॉर पीपल who have demonstrated, ये कीवर्ड है, demonstrated a product thinking, who have demonstrated good and logical understanding of the market as well as the user। अगर ये है आपकी, आप एपीएम बन सकते हो, पीएम बन सकते हो, ठीक है? दैट्स व्हाट अ करियर लुक्स लाइक। पैसे वैसे बहुत अच्छे मिलते हैं, चालू ही होती है 12-15 लाख रुपए से, एंड सीपीओ लेवल पे तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ डिपेंडिंग ऑन, अगर इंडिया के अंदर हो तो उस लेवल तक सैलरी जाती है आराम से। अभी थोड़ी शायद कम हो गई होगी थैंक्स टू द मार्केट, बट रिकवर कर जाएगी। सोनुपम, व्हाट डज करियर इन पीएम लुक लाइक? Huh, I think in terms of hierarchy, this makes complete sense, right? Typically, this is what even I have experienced. I think the one point that I will add is that initially it starts with being an individual contributor, and then slowly transitions into you also leading a team, right? And like you said, so initially to kafi sara you'll be close, like in your early levels you'll be closer to data, right? You will understand all of that really well, systems, etc. But at some time you'll have to transition into setting the vision for the product, right? Being able to lead product managers under you, right? Making sure that they are able to carve out a success path for themselves, right? तो वो जो ट्रांजिशन होता है वो भी थोड़ा ट्रिकी और इम्पॉर्टेंट रहता है। ऑब्वियसली अभी वो इमिजिएटली एप्लीकेबल नहीं है, बट आई थिंक समवेयर इफ यू कैन ऑल्सो get yourself under a good mentor, and eventually I would say at a PM SPM levels have the opportunity to mentor some mentees, that is also going to be incredibly good, because as you do that you will yourself also know okay, I'm good at these things, and these are the areas where I can also get better and get some mentorship or coaching, right? So I think figuring that as you move through these ladders, figuring that right level of mentor for yourself and also being able to mentor others is also going to be extremely important to get to that CPO kind of level. So just one little thought there. Awesome. Amar? Amar? Yeah, so I think both of you all have pretty much summed it up, and I think there's one other aspect to this which Talvinder, I think in the next few sessions you're probably going to cover, which Talvinder himself has, I think designed. Uh, it is about, while you're working as an APM or a PM or an SPM, etc., right? Within the product management sphere, there are many different kinds of product managers, right? So I think that's one additional point to what both of y'all have said, which becomes very important, especially as freshers, because I didn't have that kind of understanding or guidance when I first stepped in, right? And at a beginning stage, if you're able to find the kind of product manager that you are, and you build on top of that, you will be able to create a niche, right, which is unique to you, right? And that is what, when you start applying or start proving your metal, which really supports you as you grow, right? And it could be, it could be a domain expertise, it could be, maybe a function expertise, maybe it could be whatever it be, right? I'm not going to get into the technical terms, but yes, that's finding the kind of product manager you are is very helpful as you grow through all of these stages. Awesome. Okay, so we are pretty much at the fag end of the entire, in fact, we are 1 minute over, but because we took 1 minute extra in the beginning, so
फाइनल वर्ड्स, एंड इन द फाइनल वर्ड्स आई थिंक बहुत सारे सेशंस होने वाले हैं इन द टिपिकल, लेट मी चैनलाइज माय इनर यूट्यूबर। तो दोस्तों, बहुत सारे सेशंस होने वाले हैं, बहुत सारी अच्छी बातें होने वाली हैं। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा हम तीनों को। दैट्स प्रीटी मच व्हाट ऑल आई कैन डू। But yeah, in the final, I think final homework which I like to give, a quick homework है कि प्लीज बुक पढ़ने की थोड़ी सी आदत लगा लीजिए, छूट चुकी होगी शायद सब लोगों की। तो we all three will recommend one book that start reading and try to finish before each upcoming sessions. Um, uh, for me, the first book actually is थोड़ी सी tedious book, and the book is Four Steps to Epiphany by Steve Blank. That's a very tedious, very moti book. But if you can find like a YouTube version of it, which is very chotu, then just read it up. That is like the master book of everything. बाकी सारी books जो है ना वो उसी से कुछ कुछ निकल निकल के बनी है, right? So that's the book that I'll recommend strongly. Amar, which book would you recommend? So I'm going to recommend sort of a user point. It's a book called Hooked Yes. by Nir Eyal. Yeah. Okay, Nireyal.